मेथड में इंटीग्रेशन जैसा क्या है कि उसे इंटीग्रल Yeah. Yeah. Can you repeat the question? सर जो इंटीग्रल मेथड है ना, तो उसमें इंटीग्रेशन जैसा क्या है कि उसे इंटीग्रल कहा गया है? अरे पूरा इंटीग्रेशन तो किया हमने, डेरिवेशन जो किया था इंटीग्रेशन से किया था हमने। जितना भी अच्छा हमने डेरिवेशन किया, ln CA माइनस ln CA बाय C नॉट माइनस ln 1 माइनस x इक्वल टू KT, ये सब कैसे आया? इंटीग्रेशन से आया ना हमारे को। हाँ सर, हाँ मतलब वो प्रोसीजर। हाँ, प्रोसीजर था इंटीग्रेशन से था, राइट। राइट नाउ अभी जो डिफरेंशियल मेथड में जो देख रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इंटीग्रल, वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल मेथड। ओके सर, क्लियर है। Okay, you'll see it again so that you can get clarified or get clear ideas. So is this visible? Differential method of analysis में we started with यस looking at integral method. Integral method में essentially what we do is we assume an order n equal to 1 or n equal to 2 and then use the integral form of the equation. जो हमने equation derive किया था n equal to 1 के लिए minus ln CA by C naught is equal to minus ln 1 minus x equal to KT. That is found by integration of the rate equation. The first order rate equation जो हमने लिखा था बैच रिएक्टर के लिए, उसको इंटीग्रेट किया तो हमें ये क्वेश्चन मिला था। तो assume n equal to 1 and find the value of k. और k के वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी प्लॉट माइनस ln CA by C नॉट वर्सेस टाइम और माइनस ln 1 माइनस एक्स ए वर्सेस टाइम। अगर स्ट्रेट लाइन आया पासिंग थ्रू जीरो, दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड स्लोप इज इक्वल टू के। ये हमने देखा था पूरा। हमने व्हेनेवर यू डू द डेरिवेशन वी ऑलवेज प्लॉट y एक्सिस x एक्सिस प्लॉट करके वी से गेट सम स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में आया डेटा पॉइंट्स तो दैट मीन्स n इक्वल टू 1 इज assumption इज करेक्ट। अगर नहीं आया then we say let us try n equal to 2, assume order is equal to 2 and then use the equation for second order reaction 1 upon Ca minus 1 upon Ca naught is equal to Kt, and then we plot 1 upon Ca versus time, and if you get a straight line which is passing through 1 upon Ca naught, then the slope is equal to K. अगर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर आ गए हैं तो then it is a second order equation reaction, assumption is correct. That is how we do integral analysis, and that's how you are going to do all the experiments. Almost all the experiments are like that: first order, second order. So do first order and second order. You will assume n equal to 1, calculate ln minus ln Ca by Ca naught from experimental data, and plot minus ln Ca by Ca naught versus time. If you get a straight line passing through origin, that means it's a first order reaction and k equal to slope. अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं तो then you plot 1 upon Ca versus time, and you should get a straight line passing through 1 upon Ca naught on the y-axis. Intercept should be 1 upon Ca naught, and point should lie almost on the straight line. Exactly नहीं होगा because experiment में बहुत errors रहते हैं. I'll talk about that also. So in that case, the slope is equal to k, and the order is second order. And that is what we call integral method. So take a particular rate equation, assume n equal to 1 or 2. Compare predicted means your straight line रहेगी, right? Minus ln Ca by C naught versus time versus experimental data. जो experimental data आएगा वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो ऑर्डर चेंज करने का और फिर ट्राई करने का. So integral method is useful for splitting simple reaction types, first order, second order, elementary reactions. It is not for fractional. Fraction के लिए मुश्किल होता है because equation itself is going to be complicated or complex.
And that is what we have been doing. जितना हमने किया अभी तक इंटीग्रेशन जितना भी किया, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इवन वेरिएबल वॉल्यूम और सीरीज रिएक्शंस और पैरेलल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, सब इंटीग्रेशन थे. They are all integral methods. Is it clear? Integral method of analysis. जो हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए अभी तक, we have done so many problems in this unit. They all were based on integral analysis. But always assume n equal to 1, find out k value. अगर constant आया सब डेटा पॉइंट के लिए तो then it is correct. Straight line आया तो correct है. Otherwise assume another order and try again. So any doubts on integral analysis of batch reactor data? एग्जाम में बहुत बार आता है कंपेयर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस. So you should be able to tell what exactly is the integral method of analysis and what is the differential method of analysis. डिफरेंशियल मेथड देखेंगे अभी, बट इंटीग्रल में किसी को डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकता है हमें. ठीक है, there are no questions. Let's proceed to differential method. So in this case, what you do is test the fit of the rate equation to data directly and without integration. So हमने equation जो derive किया था, minus ln CA was C not equal to KT, that was by integration. So we are not going to take integral. We are going to take directly minus R is equal to minus dCA by dt equal to K CA to the power of n and find out K and n. So we need to find out dC by dt or 1 upon V dN by dt from data before fitting the procedure. We'll see that. So what you do is plot CA versus time concentration जो measure करेंगे lab में. What you do is I don't know आप लोगों का B बैच का हुआ है क्या? C बैच का हुआ है, A बैच का नहीं हुआ. So what you do in the lab, what is done in the lab is essentially we take a beaker and we have a magnetic needle. And then we add, suppose we add ethyl acetate equal to 250 ml 0.1 normal solution and add NaOH. Mute करो सब. I don't want background noise. जो टाइम पास कर रहा है यहाँ पर उसको बैकग्राउंड नॉइज बंद करो. I don't want background noise. So 25 ml of NaOH of 0.1 normal. This experiment, you add this and the reaction क्या होगा इसका? What is the reaction? Ethyl acetate क्या है? What is the form of ethyl acetate? Anybody? CS3COOC2H5. Excellent. So we have acetate group, sorry, acetate and ethyl group. So ethyl acetate and NaOH का reaction क्या हो जाएगा reaction? Reaction क्या रहेगा? Sir, ethanol plus sodium acetate. Correct. Right. So ethanol and sodium acetate will get. So what we do is when you stop this, when you mix this, add this thing, immediately stop the timer, or sorry, start the timer.
So at time t equal to 0, we have the reaction mixture contains 250 ml ethyl acetate plus 25 ml NaOH, right? And both are 0.1 normal, approximately 0.1 exactly, different होगा थोड़ा, but we'll take it as 0.01, 0.1 normal, right? So and what is the concentration? What is the concentration or at time t equal to 0 concentration of NaOH क्या हो जाएगा reaction mixture? What will be the concentration of NaOH in the reaction mixture? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझा क्या देवेंद्र? Yes, sir. So what will be the concentration of NaOH in the reaction mixture at time t equal to 0? Because we need Ca0, right? This is equal to Ca0. फर्स्ट ऑर्डर पे लिया तो Ca0 का वैल्यू चाहिए, सेकंड ऑर्डर पे लिया Ca0 का वैल्यू चाहिए, तो Ca0 कैसे फाइंड करेंगे? दीक्षिता, सर मोल्स पर लीटर हाँ कैसे करेंगे? जल्दी तो प्रोसीजर है। फ्रॉम नॉर्मेलिटी ऐसे व्हाट शुड आई राइट? You tell me and I'll write whatever you want me to write. Siddhi, Yes, sir. how to find the concentration at t equal to 0? सर 0.1 होगा ना? 0.1 कैसे होगा? सर वो फॉर्मूला 250 इंटू 0.1 प्लस 25 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 275. ये क्या हो जाएगा? What is this thing? Concentration of the mixture. मिक्सचर ही चाहिए मेरे को, NaOH चाहिए. I just want NaOH concentration. I don't want mixture concentration. Mixture is not of no use because it is two compounds. I just want concentration of one compound, any one compound. NaOH बोलो या ethyl acetate बोलो, कोई भी, doesn't matter. Procedure is same. You're on the right track, but थोड़ा सा सोचो. Track is correct. थोड़ा सोचने का. I don't want mixture. सर इज इट 1 मोल हाँ 1 मोल 1 मोल नहीं होगा ना. 1 मोल पर लीटर 1 मोल कैसे होगा? This is simple PC. कुछ नहीं है. सर वो 0.0025 होगा ना NaOH का? And कैसे लेकिन? Tell me. I don't want the answer. Tell me the procedure. Important thing is how do you do it?
नॉट व्हाट इज आंसर. आंसर आएगा, प्रोसीजर करेक्ट है तो. सर 0.1 नॉर्मल NaOH है ना, तो मतलब 0.1 मोल्स इन 1 लीटर, हाँ, तो 25 ml है तो उसमें कितना होगा? कितना होगा बताओ ना. सो 0.0025 आ रहा है. कैसे कैसे किया? करस्पॉन्डिंग किया ना. 25 into 0.1 is divided by 1000. कैसे किया? How did you get 0.0025? I want you to think. Think. इसमें बहुत को लोग मिस्टेक करते हैं. I know a lot of people who make mistakes in simple calculation like this. 5-6 साल पहले जब मैं आया तो एक्सपेरिमेंट भी गलत करते थे हम लोग. बस लोगों को समझा ही नहीं था, कराने वाले को भी नहीं समझा था. करने वालों को तो समझ छोड़ दो, कराने वाले क्या कुछ नहीं समझा, करने वाले क्या समझेगा. Okay, so let's understand the basics now. So I have 250 ml of ethyl acetate and 25 ml of NH. Total reaction volume कितना आ जाएगा? 275. 250 ml is ethyl acetate plus 25 ml is NaOH. So it is 275 ml of reaction mixture है मेरे पास. इसमें NaOH कितना है? और ethyl acetate कितना है? NaOH is only 25 ml. ethyl acetate is 250 ml. तो ये रिएक्शन मिक्सचर में NaOH कितना रहेगा? I can do simple. I have 25 ml of 0.1 normal. I am dialing it towards 75 ml. So I can do simple N1 V1 equal to N2 V2. ये फॉर्मूला आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा बहुत बार. टाइट्रेशन में करते हैं, सब जगह करते हैं, बराबर ना? किया कि नहीं? हाँ सर. यस सर. There is nothing but material balance. Simple, very simple form of material balance. So if I take 25 ml of 0.1 normal NaOH, बराबर ना? And diluted to 275 ml, what will be the normality of NaOH in that dilute solution? वही कर रहा हूँ मैं. I am taking 25 ml, adding 250 ml of ethyl acetate. Basically ethyl acetate is nothing but mostly water plus a small amount of or 0.1 gram equivalent per liter of ethyl acetate. So mostly it is water only. तो water लिया मैंने instead of ethyl acetate. Suppose I take only water here, 250 ml and 25 ml of NaOH. तो क्या हो जाएगा? 275 ml हो जाएगा, बराबर. तो I'll get normality equal to क्या हो जाएगा? So that is nothing but original volume, original normality into 1/11. is a ratio here, volume ratio. That is 11. So I am diluting it with 10 times the volume of water or ethyl acetate, doesn't really matter. टोटल वॉल्यूम बढ़ गया उसका तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा उस प्रोपोर्शन में, बराबर है. समझ में आ रही है बात? ये सब प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं आपके घर. यू शुड अंडरस्टैंड. आई एम डूइंग A, C and D बैच, B बैच स्पेशली समझो ये कैसे कैलकुलेट करने का.
Any questions? सर यहाँ पे या हेलो हाँ बोलो। हाँ सर यहाँ पे इथाइल एसीटेट का नॉर्मेलिटी नहीं कंसिडर करने का क्या? वो बताता हूँ मैं। फर्स्ट कंसिडर NaOH का नॉर्मेलिटी कैसे आया, बराबर है कि नहीं, समझा कि नहीं? देन आई हाँ ये समझा सर। What is important I am covering first, what is not important I will cover later. Most important is this thing. इसी में मिस्टेक करते हैं people, just take 1/2, 0.1/2. उनको लगता है आधा हो जाएगा या 0.1 ही रहेगा. The normality calculation is almost always a mistake. Okay. So what we do is this: when we are doing experiment, there are two experiments which you do. First is, in order अलग-अलग होगा, doesn't matter, it depends on teacher what he or she wants to take. There are two experiments. One is pseudo first order, and second one is second order. Same reaction. क्या होता है इसमें? In this we take 250 ml ethyl acetate plus 25 ml NaOH. Both are 0.1 normal. And in this case we take equal volumes. Doesn't matter क्या लिया, not important. Understand the difference between pseudo first order and second order. तो pseudo first order लिया तो we take one in excess, right? Pseudo first order बताया था मैंने आप लोगों को. I had explained the derivation also, right? When you say pseudo first order, we take second order reaction. This is actually second order reaction. Ethyl acetate plus NaOH is actually second order reaction. This is actually second order reaction. If I take equal volumes or equal concentrations. और moles, essentially moles. So अगर मैंने लिया 200 ml 0.1 normal ethyl acetate plus 200 ml 0.1 normal NaOH. So this is equal moles of both the reactants. So it's a second order reaction. ठीक है, समझ में आया ये? हमने डेरिवेशन किया था, राइट? एंड वी गॉट द इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का 1/Ca minus 1/Ca naught is equal to Kt. ठीक है, but now if I take excess of A1 component, that means I am taking 250 ml ethyl acetate 0.1 normal plus only 25 ml NaOH 0.1 normal. So which is the reactant in excess? इथाइल एसीटेट। So ethyl acetate is in excess, right? So this is excess reactant. And this is the limiting reactant.
So this becomes what? What kind of reaction it becomes? Pseudo first order. Pseudo first order. And pseudo first order किसमें है? First order in what? Which reactant? Always limiting reactant. And in this case it is NaOH. So it doesn't really matter ethyl acetate का क्या concentration है. It doesn't really matter. What I need to know is what is the concentration of NaOH. And that is why I was asking you what is the NaOH concentration in that mixed reaction mixture, because I am not going to track or monitor or measure ethyl acetate concentration. That is not important at all for pseudo first order reaction. I only need to monitor or track or calculate NaOH concentration. समझ में आ रही है बात? Why I didn't bother about ethyl acetate concentration in that reaction mixture? Ritesh? हाँ सर, समझ आया सर. Okay. You understand the difference. Second order and pseudo first order reaction, you have to understand one reactant is in excess. You don't bother about it because it's almost going to remain constant. उसका मोल्स इतना कम नहीं होने वाला कि कुछ इफेक्ट होगा. थोड़ा होगा, 10% इफेक्ट होता है, बट 10% इज नथिंग because our measurement accuracy is not so much. Okay, तो समझ में आया लोगों को? Now if I take equal volumes, ये जो लिया था मैंने यहाँ पर, again the same thing. Let me come back to this one. Okay, तो इसमें जो लिया हमने, तो what is the concentration of NaOH in the reaction mixture? At again time t equal to 0. क्या होगा? Who can tell me? सेम कॉन्सेप्ट जो पहले किया आपने है, pseudo first order के लिए और second order के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. There's no difference. Concept is will remain the same. Concept is not going to change. Only the volumes are changing, data is changing. 0.05. Excellent. So now I'm taking equal volume here. Doesn't really matter. I take 200 ml or 500 ml. I'm taking equal volume. So I take again N1 V1 equal to N2 V2. Initial is 200 ml of 0.1 normal NaOH. Final is how much volume? डाइल्यूशन के बाद कितना हो जाएगा? मिक्सिंग के बाद कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 400. So now my this thing will be 0.1 divided by 2 because I am increasing the volume, making it double. So when you do pseudo first order, it is the factor of 11. When you do second order, it is factor of 2 only. So यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और उनको समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं मिस्टेक ये. Nothing but material balance. ठीक है, समझ में आया आपको? CA0 essentially CA0. Again, यहाँ पर हम you can take anything because equal volumes है, equal moles है, you can take anything as what you call there is no limiting excess reactant.
but we are going to track NaOH because it is easy to titrate NaOH. So it is Ca naught, and this is essentially NaOH concentration. So essentially, I am explaining you the entire experimental procedure of almost all the experiments are like this only. Pseudo first order, second order, pseudo first order, second order, pseudo first order, second order. Then पूरा semester ये करने का आपको. Maybe it will be titration, maybe it will be conductivity. So, and if you understand this basic, your experiments are going to be very, very easy. If you don't understand it, then you are just going to copy something. ठीक है, समझ में आया इतना? This is the first step of reaction or experiment. उसके बाद क्या करेंगे हम? What to do is at time t equal to say 1 minute, doesn't matter time लिया हमने, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, we take samples of 20 ml from this mixture, right? So यहाँ पर जो रहेगा एक pipette रहेंगे and we take samples at these times. And what we do is we take samples and then have conical flask. जैसे 5 रहेंगे sample. And in this you'll have in each of these you'll have what? 20 ml of 0.1 normal HCl before we add this sample here. At these times. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? I'm telling you experimental step because that is ultimately what we are going to do is the integral analysis करने वाले हैं हम वहाँ पर. Differential नहीं करते, थोड़ा difficult होता है, but वो भी कर सकते हैं. Okay, so what happens in the reaction? Reaction में ये होता है. So NaOH is or limiting reactant or whatever. We are tracking only NaOH. Ca naught भी निकाला, NaOH का निकाला और बाद में भी NaOH करने वाले. तो क्या होता है? If I take sample at 1 minute and I just keep it like that, तो क्या होगा? Reaction बंद होगा कि चालू रहेगा? If I just take sample and I don't have HCl here in the conical flask, I just take sample of the reaction mixture and keep it there. Titration में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्या होगा? रिएक्शन बंद होगा कि चालू हो जाएगा? चालू रहेगा. समझ रही बात? क्वेश्चन मेरा? Do you understand my question, Nupur? This is the reaction mixture, right? Ethyl acetate plus NaOH. ये reaction होता है, and I am taking a sample out at 1 minute and keep it in a conical flask without doing anything. And it takes me some time to set up the titration for NaOH. HCl से titrate करने का, तो थोड़ा टाइम लगता ही है. उस टाइम पे रिएक्शन चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? डी बैच एंड सी बैच को एक्सप्लेन किया है मैंने. ये reaction will keep on going because reaction मिक्सर कुछ नहीं कर रहे हैं. That is why we add HCl. HCl क्या करेगा? What will HCl do? What does HCl do? HCl क्या करेगा? If I add HCl and then add reaction mixture here, what will happen? So pH कम करेगा. pH कम करेगा नहीं, NaOH से रिएक्ट करेगा. And that's why we take HCl in excess,
so that all the NaOH unreacted NaOH is reacting with HCl and the reaction stops. So this is essentially made to kill the reaction or stop the reaction. That is the purpose of HCl. So in that conical flask, we take 20 ml of HCl. We know that it is excess because we are taking only 20 ml of the reaction sample. इसमें NaOH जितना नहीं रहेगा, तो जितना भी NaOH रहेगा unreacted वो HCl से react हो जाएगा और बाद में थोड़ा HCl unreacted बच जाएगा. Because we are taking HCl excess in excess of NaOH which will come from the sample. And then we titrate HCl जो unreacted रहेगा with NaOH in the burette, and then we find out कि कितना HCl unreacted था. From there we can calculate कितना NaOH unreacted था in the reaction mixture. उसके कुछ formulas है. I'm not going to cover that formula, that's given in your write-ups. Simple burette reading रहेगा, normality रहेगा NaOH का और HCl का, तो you can calculate how much is the what you call NaOH unreacted. But understand the purpose, how we are getting it. Any questions? दीक्षिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. Devendra? Yes, sir. Okay. So that's what we do. And that is your experiment procedure, right? First order है, second order doesn't matter. Pseudo first order में same करेंगे, second order में भी same करेंगे. Procedure is almost same. Only thing is reaction mixture changes. Procedure is identical. Either you do this बाद में HCl titration से करेंगे या conductivity से करेंगे. That's a measurement procedure. Doesn't really matter क्या कर रहे हैं. Ultimately this is your experiment. Right? So then what we do is we find out what is the concentration at time t equal to 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, जो भी था हमारा, राइट? जो सैंपल लिया था हमने उसके हम C0 निकालेंगे बाय टाइट्रेशन बोला कंडक्टिविटी होगा. Once we get the value of Ca, we can try integral method बोला तो we assume n equal to 1 and equation is minus ln Ca by Ca0 equal to Kt, and then you plot so if it is pseudo first order then you should get something like this. You will not get exactly points on the line, you will get a scatter of points, some कुछ ज़्यादा दूर रहेंगे, कुछ कम दूर रहेंगे, but you have to pass a line, best fit line, through the points. And this is also called eyeball test because you are using basically your eyes to fit the curve, fit the line. ये point fix है अपना 0, it says to pass through 0 0. Now we have to see कि straight line रख के कहाँ से plot किया, तो basically अपना जो error रहेगा, error between this and this should minimize because you are talking about this is experimental value, this is the predicted value, right? So this is prediction. And this is experimental value. So what you want to do is you want to minimize the error between this and this, and not just for one point, for all the points combined. So essentially what we are doing is we are taking
suppose I draw this line here. At this time, this is the experimental value. This is the experimental value, and this is the predicted value, right? So these are two values, experimental, predicted. So we are trying to minimize the error between this and this. So that's why we try to fit a curve through this or straight line through these points, so that some points are above the line, some points are below the line. और ऐसा होगा कि maybe there is no point which is following on the line. But some points will be above. Okay, mathematically this is called minimizing the square of errors. Whatever is the error between experimental and predicted, इसका square लिया तो minimum करना चाहिए. And this is what is equivalent in graphical method. समझ में आया ये? This is your pseudo first order test. And if you can get something like this, then you can find out the slope, and slope is equal to k. Right? So k मिल गया आपको, n पता है, n assume किया था हमने. So what you get is rate equation. The rate equation will be समझा गया? Is that understood? एक्सपेरिमेंट में यही करने वाले हैं आप. और इसमें एक और टेस्ट है. If it is second order, equation is or so if we draw a curve here again, similar to what we did before. We'll get a straight line which will pass through this point, which is 1 upon CA naught, and this is 1 upon CA versus time. And here also you will not get points exactly on the line. You'll get a scatter similar to what we saw before. And again here, slope is going to k. So this is your second order. So सब experiment में we do this thing, we plot first curve. Again, if it is pseudo first order, we draw this line to see what kind of curve we get. ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा. We get something like this. ऐसा कुछ कर्व मिलेगा. Because ये पॉइंट तो रहता है फिक्स अपना. और ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, कहीं भी रहेगा, नीचे कहीं रहेगा पॉइंट ही, 1 मिनट वाला पॉइंट. So it's not going to be like this, it's going to be something like this. So both the graphs are drawn for all the experiments, whether it's pseudo first order or second order. You're testing both the cases for all the experiments, in concluding कि first order है कि pseudo first order है कि second order. समझ में आया? Any questions or doubts on this integral method of analysis?
ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो लेट अस गो बैक। कल भी ऐसे हो गया था, डिफरेंशियल रह गया था हमारा, आज भी थोड़ा रह जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो डिफरेंशियल मेथड हमने देखा ये। सो व्हाट वी गेट इज सी हमने कैलकुलेट किया है, वी सॉ हाउ टू कैलकुलेट सी ए वैल्यूज फॉर ऑल द टाइम्स एंड वी नो द टाइम वैल्यूज, सो यू कैन ड्रॉ अ कर्व। और यहाँ पर भी ऐसा रहेगा कि यू नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन passing through all the points, you'll get a scatter. So you have to draw a smooth curve through the points. Again, it is eyeball test. Smooth curve draw karega. Right, and this should be your CA naught. This fixed, you know this value. Okay. So once you get this thing, then what you do is you take different points, different times, T1, T2, T3, and then dot tangent. This is essentially a tangent at that point to the curve. राइट, और इसका फिर स्लोप निकालेंगे, ये टेंजेंट का स्लोप विल गिव अस माइनस डी सी ए बाई डी टी, राइट, बिकॉज वाई एक्सिस इज सी ए, एक्स एक्सिस इज टाइम, सो स्लोप शुड गिव अस डी सी ए बाई डी टी, माइनस डी सी ए बाई डी टी। समझा गया हाउ टू गेट द रेट और माइनस डी सी ए बाई डी टी फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। And because we are taking derivative, that is why it is called differential method. And this taking derivatives, drawing a curve and taking tangent, it's not so accurate. इसीलिए ये जनरली लैब में भी नहीं करते हैं। यू नीड वेरी एक्यूरेट डेटा। ये लैब में हमारा एक्यूरेसी बहुत कम रहता है, एंड दैट इज़ वाई डिफरेंशियल मेथड हम एक्सपेरिमेंट में नहीं करते हैं। वी डू ओनली इंटीग्रल मेथड। यू नीड वेरी एक्यूरेट डेटा फॉर डिफरेंशियल मेथड। ओके, सो ये मिल गया अपने को, डी सी ए बाई डी टी मिला। ये हो गया प्लॉट सी ए वर्सेस टाइम, curve will not pass through all the points, but we need a smooth curve. Return slope of the curve at selected concentration values by drawing a tangent. So you get minus dca by dt. Right now, once you get dca by dt, we can search for rate equation to represent minus ra versus ca data by again picking or assuming, essentially assuming and testing a particular rate equation, first order, second order, right, n equal to 1 or 2. Or you can do a general form, taking an nth order form, minus ra equal to k into c to the power of n, and taking logarithms. So what you get is log of, essentially this is right. So minus dc by dt का log लेने का is equal to log of k, because that's the equation, right? Log of minus ra is equal to log of k plus k n into log of ca. So if you plot this y-axis versus log of ca, you should get a straight line. माइनस आर ए और माइनस डी सी बाई डी टी वर्सेस गैस वाला छोड़ो, ये वाला ले रहे हैं, लॉग ऑफ सी ए प्लॉट किया तो शुड गेट स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट विल बी log of k एंड स्लोप विल बी n. यू कैन डायरेक्टली गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एज्यूम किया तो यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर वर्सेस सी ए प्लॉट करने का है, फर्स्ट ऑर्डर रहा तो सी ए प्लॉट करना है, सेकेंड ऑर्डर सी ए स्क्वायर प्लॉट करने का है,
and then it should go through 0, 0, and then you get slope equal to k. So you can use this or both. Assume value of n equal to 1 or 2 and find out k, or take the logs and find out both n and k directly. ठीक है, समझ में आया डिफरेंशियल मेथड? Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल मेथड समझ में आया? Yes, sir. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स में यही करने वाले, डिफरेंशियल मेथड नहीं रहेगा, बट यू कैन ट्राई, अगर ट्राई करना है तो। सेम डेटा, कुछ नहीं है, सी ए चाहिए, सी ए वर्सेस टाइम ही चाहिए, देख सकते हो, ट्राई करना है तो कर सकते हो। एक्चुअली इस पर 2 सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, एक इंटीग्रल मेथड का, एक डिफरेंशियल मेथड का, वो आप देख सकते हो। आई विल कवर दैट नेक्स्ट टाइम इन दैट क्लास ऑल्सो, so that you understand better. But essentially, that's the difference between integral and differential method, and that's how you do it. Any questions? Murtaza, हेलो सर, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के पार्ट से एक क्वेश्चन था। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं है, दिस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं करते हम। नहीं सर, जो कल हमने पढ़ा था ना, उसमें एक डाउट था रिवर्सिबल का। ओके ओके, हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ पे सर, जो हमने रिएक्शन की जो साइन ली थी ना, माइनस डी सी बाई डी टी, वो माइनस कैसे रहेगा, क्योंकि ए फिर से फॉर्म भी हो रहा है ना। नेट है ना वो तो, फॉरवर्ड वन इज रिवर्स, राइट? और जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन में इट इज ऑलवेज रिएक्शन इज हैपनिंग, राइट? So A is always depleting. It can be maximum, minimum it can be 0. I mean, A can be, what you call, if I start with suppose 1 mole of A, अगर पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो 1 से कम हो, 1 ही रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट? अगर फॉरवर्ड इक्वल टू रिवर्स ही रहा पूरा तो 1 ही रहेगा, दैट मीन्स देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग। बट इन जनरल क्या हो जाएगा कि रेट इज ऑलवेज, आई मीन इट्स रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट, but forward reaction is more than the reverse reaction, otherwise there's no point in doing that reaction. ओके सर, गॉट इट। समझा ना? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन रिवर्स तो पॉइंट ही नहीं है, देन इट्स यू आर डूइंग इट उल्टा साइड, आर टू ए। हाँ सर। समझा कि नहीं? whether treated as A to R or R to A doesn't really matter, it is my convenience. समझा ना? So forward reaction has to be definitely more than the reverse reaction, then only I can get a product. सर मतलब K1 जो है, मतलब A to R का, वो ऑलवेज बड़ा होगा ना K2 से। राइट, जनरली बड़ा ही रहता है, दैट्स हाउ यू गेट द प्रोडक्ट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट रिएक्शन, आई विल नॉट नेवर गेट द प्रोडक्ट। ओके ठीक है, सर। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। आपका टेस्ट है नेक्स्ट थर्सडे को, राइट?